Assalamu alaikum. Hi everyone. Warmly welcome to all of you with another important, informative, productive kind of training session. So I hope it will be beneficial for a lot of safety professionals who are wishing to work for Saudi Aramco at their project as a safety officer. So the topic is quite self-explanatory. How to be get approved as a Saudi Aramco safety officer. सऊदी अरामको से सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर मंजूरी कैसे हासिल की जाए। सो आई ट्राई टू यूज़ ड्यूल लैंग्वेज। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये रिकॉर्ड होता है कि एक वन शॉट में ग्लोबल कम्युनिटी को इसका बेनिफिट हो सके इंशाल्लाह। सो आई होप it would be beneficial globally for every individual or any individual who wish to work for Saudi Aramco. So let's start. चलें जी, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। देखें, सऊदी अरामको में जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में अप्रूवल की बात करते हैं तो बेसिकली डैट मीन्स कि आपकी कंपनी, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जो सऊदी अरामको की कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, उसके पास सऊदी अरामको का कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है सऊदी अरामको के साथ जहाँ पे उन्हें सेफ्टी प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए, वो बल्कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स के बगैर आप बिडिंग में नहीं जा सकते। यू कांट इवन अप्रोच सऊदी अरामको टू start your project or even to go for kind of initial meetings, without safety representative. So in that segment, first let's realize that we can't get even a single project without the representation of our safety staff members. So in that segment, whatever allocated or described in the contract by Saudi Aramco, mutually agreed with the contractor, and some requirements are of course are standardized कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है सऊदी अरामको की प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि आपको सेफ्टी ऑफिसर लाजमी रखना पड़ेगा, आपको सेफ्टी मैनेजर लेके आना पड़ेगा, आपको सेफ्टी सुपरवाइजर लाजमी इस प्रोजेक्ट पे, इवन वर्क पे में रिसीवर का होना लाजमी है, इसी तरह कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर का होना लाजमी है, फायर वॉचर होना चाहिए, एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। सो इन ऑल सेगमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी शिकें इट्स ऑल एग्रीड म्यूचुअली बिटवीन सऊदी अरामको एंड योर कंपनी। Now the point is why Saudi Aramco blindly should accept you as a safety officer। मतलब सऊदी अरामको आपको आपके कॉम्पिटेंस लेवल को वैल्यू किए बगैर व्हाई शुड दे एक्सेप्ट यू, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया कि जी जो सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी मैनेजर है या इवन सुपरवाइजर है या WPR है, वो एक सर्टेन फेजेस से गुजर के अप्रूवल गेन करेगा जस्ट टू मेक श्योर that the right person for the right job is hired and being referred to Saudi Aramco and being allowed even to work at Saudi Aramco projects। तो ये pretty straightforward requirement है कि आप सऊदी अरामको की जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जो भी रिक्वायरमेंट आपने साइन की है आप उससे वायलेट नहीं कर सकते। तो चलें डिस्कस करते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर को सऊदी अरामको से अप्रूव होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अदर दैन सऊदी अरामको ये बात ज़रूर करूँगा कि आप जितना भी सेफ्टी में नॉलेज एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं जस्ट ट्राई टू गेन इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितनी सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि यू आर हाईली कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल्सो you have plenty of knowledge but unfortunately no evidence, and what is your evidence? That kind of certificate. So keep an evidence either through any third party training company, you can come to us even. So let's discuss what are the phases as a safety officer if you truly want to get approved by Saudi Aramco, कि कैसे आपने अप्रूव होना है, उसके क्या फेजेस हैं, and it's kind of a self explanatory also। number one is कि पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन सऊदी अरामको रिकमेंड कर रही है कि एक सेफ्टी पर्सनल या सेफ्टी प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजर है, सुपरवाइजर है या सेफ्टी ऑफिसर है। लेकिन इन पर्टिकुलर आई वुड मेंशन कि द हाईली प्रोफाइल्ड क्वालिफिकेशंस आर एक्सेप्टेबल बाय सऊदी अरामको, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच आर मेंशन्ड एट द लास्ट line, like copy of CSP सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल या CHST या OHST या IOSH सर्टिफिकेट। इवन कई प्रोजेक्ट्स पे वो
IADC, लाइक अगर आपको सेफ्टी ट्रेनर भी उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है तो आपको IADC की या HABC या IOS ट्रेनर कुछ ना कुछ रैम को अपनी रिक्वायरमेंट में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लाजमी दिखेगी कि ये बेसिक इनिशियल क्राइटेरिया। और इसी तरह आपकी जो कंपनी है उन्होंने जब आपको हायर किया था तो उनका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया था कि जी आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप मेक श्योर कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, देन आप इंटरव्यू के लिए आए या इवन अप्लाई भी करें, राइट। सो देर इज अ हायरिंग क्राइटेरिया इवन फ्रॉम योर कंपनी साइड। अब पॉइंट ये है कि आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर अप्रूव होना चाह रहे हैं तो इस सेगमेंट में व्हाट यू ट्रूली हैव टू डू इज मेक श्योर यू फॉलो these certain steps, because there is kind of criteria like Saudi Aramco, for every project there is a PMT, project management team, and what they're going to do is they'll take your interview, especially through your contractor, of course, your contractor basically will be requesting to PMT that we want to get approved few of our team members as safety officer and they are qualified as per our record, but you still evaluate them. अब वो क्या करते हैं कि CV रिव्यू करते हैं, दे स्टार्ट रिव्यूइंग द CV, उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं इंटरव्यूज के लिए, एंड आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग डेट एंड टाइम कम्युनिकेटेड विद द contractor, and the first step is the written test. And in most cases I also personally noted sometimes written test is not considered so much mandatory, but if the project is complicated and technically so much sensitive, of course they will go for written test, and that written test will be based on Saudi Aramco construction safety manual. And this construction safety manual training again you can get from us, even though it's for 5 days, but online we can manage in 3 days. So अगर आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल की CSM की अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट एंड ID यू हैव इन योर हैंड्स, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा सऊदी अरामको में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है एज अ प्रोफेशनल कि यू ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड बाय थर्ड पार्टी। तो उसमें एक तो आप ये एडवांटेज ले सकते हैं हमसे, हम ट्रेनिंग अगर आप हमारा एग्जाम पास करते हैं तो हम CSM की आपको सर्टिफिकेशन दे देंगे और ID भी इशू करेंगे, बट इट डिपेंड्स कि आप एग्ज़ाम पास कर सकें। उसके बाद डेफिनेटली फेस टू फेस इंटरव्यू विच इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो PMT प्रोफेशनल्स हैं वो डेफिनेटली अगर फेस टू फेस इंटरव्यू में by asking some questions, not so much typical, but of course much relevant to the project, because project to project some variables are there. अगर आप रिफाइनरी में एज अ सेफ्टी ऑफिसर जा रहे हैं, so don't expect के non technical questions will be there. And if you are going for like oil rig sites, of course you have to go with some certain technical studies or make sure that you are quite capable to give the answer inshallah in a best phase. Otherwise जिस कंपनी ने आपको हायर किया एज अ सेफ्टी ऑफिसर वो भी पछताएंगे कि आपको क्यों हायर किया, बिकॉज यू आर अनएबल टू गेट द अप्रूवल. सो मेक श्योर कि यू हैव टू बी द विनर इंशाल्लाह फॉर योर गुडविल, फॉर योर कंपनीज गुडविल, एंड ऑफ कोर्स टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. अदरवाइज अगर आपका स्टाफ ही अप्रूव नहीं होता तो सऊदी अरामको डेफिनेटली प्रोजेक्ट की स्टार्ट का भी इवन वो स्टार्ट की भी परमिशन नहीं देंगे. दे विल नॉट अलाउ यू टू इवन स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट getting proper approval of your staff members, especially the safety personnel. इसी तरह bear in mind कि जो पहली ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे अप्रूवल है वो 3 माह की दी जा रही है. अगर 3 माह में your performance like in first 3 months you get approval as a safety officer after passing the interview or even the written test, if there is a written test, and once you pass automatically inshallah you will be boarded up as a safety officer and you can start a good career with Saudi Aramco at their project site. It's kind of a huge learning opportunity also. That is why once a PMT number you have as a safety officer, kind of approval number, so the same number you will share with other contractors, and you can switch of job anytime and you can move on with a better career opportunities as well. अब इस इंटरव्यू के लिए भी अगर आप तैयार होना चाहते हैं या इस इंटरव्यू के लिए भी if you want to get prepared for the written test, again you can contact to us. What we gonna do is even हमारे जो YouTube चैनल है ट्रेनिंग जोन, इस पे भी कई वीडियोस हैं. You can learn by yourself, or if you still need our time, of course we will charge you some amount, but that amount will not be wasted.
सेम वे अगर आप एज अ रिगर लेवल 1 2 3 स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, CSC सुपरवाइजर, फायर वॉचर, इवन फोकलिफ्ट ऑपरेटर, किसी भी लेवल की आपने अप्रूवल लेनी है सऊदी अरामको से तो कम बैक टू अस, स्पेशली फॉर सेफ्टी प्रोफेशंस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, एंड इन फ्यूचर I'll try to bring some questions in different phases, the most relevant to project, like these questions belong to refinery, these questions belong to oil rig site. That would be our next phase, and I'm sure, those videos, future videos would also be so much beneficial for your exam preparation as well as for, for written test as well as for interview purpose. So good luck, be practical, enhance your competence level, be indispensable, irreplaceable, be a highly competent professional, and then see Allah's blessings inshallah. सीखें, दिलो जान से सीखें, अंडर एस्टिमेट ना करें। आप एक हाईली प्रोफाइल्ड, हाई हैजर्डस इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में काम करने जा रहे हैं, आई कॉल दैट इंडस्ट्री लाइक अ टिकलिंग बॉम्ब। तो आपका हाईली कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। इवन दो के कई प्रोजेक्ट्स पे नीम हकीम भी चल जाते हैं, लेकिन आप नीम हकीम मत बने। ट्राई हार्ड कि आप इतना सीखें उस प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक, कि ये नहीं कि आपकी कंपनी आपकी हेडिंग लेती रहे। आप अपना अपना पर्सनल जो ब्रांड है उसकी गुडविल के लिए, उसकी पॉजिटिव गुडविल के लिए डू हार्ड वर्क with some smart strategies and see the outcome inshallah. And if you need our support, come back to us. We have straightforward charges now, hourly charges. You need any support, just buy 1 hour from our 1 hour services from our team members, and enjoy your excellent future inshallah, especially with Saudi Aramco, even with Saudi Electricity, Royal Commission, Sadara, SABIC, or even any ministry or any brand of Saudi Arabia or any other Gulf countries. We are more than welcome to train you, to support you, to facilitate you inshallah. Thank you very much, and my WhatsApp number is already there. You can note down up, because why I'm speaking a little faster, because it's really important to save some time, because sometimes people they have no time to watch lengthy videos, right? Otherwise I'm very much addicted person to speak slowly, so make sure you understand what I'm talking about. But I still hope, since we have something in writing also, these words will also be so much helpful. दुआ में याद रखिएगा, take care of yourself. अल्लाह आप सबको कामयाब करे. So nice of you. And please refer, subscribe, like. It's your channel, it's your daily learning club, and I hope it is going to be much beneficial for the global community inshallah, without any discrimination. Take care. Allah Hafiz.